Hi, hello, namaskar. Welcome to Pristine IAS. Myself, Pavitra Kumar Nayak. So today is your GS 1 part 3. GS 1 रो part 3 आज हमें डिस्कशन करिया PYQ 2024 रो. आपरे जितने भी GS 1 सरला परे 2, 3, 4 सबुडा मैक्सिमम तीन पार्ट रे डिवाइड करके कंप्लीट करिया. 17 क्वेश्चन रहइबो. तो पांचटा छटा लेखा गोटे गोटे सेशन नै कि हमें तीनटा लेखा पार्ट रे कंप्लीट करिया. फाइन. So आज रो ए लेक्चर रे we will complete 4 questions. First is social empowerment. Second is Odisha festival reflects pluralism and social harmony. Third question is assess the major factor that led to creation of separate province of Odisha. And the last question for today's discussion is cause, course and historical significance of PYQ rebellion 1817. এই চারটা question আমি discussion করিবা. So before we discuss, let me show you something. How to use the material that we have given you and how much the material is useful for the upcoming OCS mains. Last year ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 2024 ରେ मेंस क्वेश्चन ऑलमोस्ट 130 150 मार्क केवल आ केवल ओडिशा पार्ट पचारथिले. मे बी ताटू अधिक भी होई पारे. सो देखो जने फर्स्ट अछि सोशल एम्पावरमेंट. फाइन. एटा कोन लिखा है रेफर पेज 48 ऑफ GS1 सोसाइटी मटेरियल. ओके आमे दिबा पेज 48 को देखिबा मटेरियल ले कोन अछि एंड हाउ टू यूज दैट. ओके पेज 46 47 48. ओके क्वेश्चन कौन थिला. क्वेश्चन थिला अबाउट सोशल एम्पावरमेंट. फाइन. क्वेश्चन वाज अबाउट सोशल एम्पावरमेंट. तो देखो हमारो सोशल एम्पावरमेंट रे दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ सोशल एम्पावरमेंट चैप्टर 8.1 और यू कैन से टॉपिक जोटा हमरो सोसाइटी रो हमें नोट्स बनैछु जोटा हमें बुक फॉर्म में रिलीज करिवो. सो सोशल एम्पावरमेंट टॉपिक टू स्टार्ट हला theoretical framework of empowerment, conceptual distinction, amartya sense capability approach, forms of empowerment, social empowerment kono, economic empowerment kono, political empowerment kono, then constitutional and legislative safeguards. एटी constitutional safeguards ए क्वेश्चन भी ऑलरेडी पचार सारछि ओपीएससी. आर्टिकल 14 15 15 3 15 4 16 17 21 46. Then legislative milestone, Protection of Civil Rights Act 1955, SC/ST Prevention of Atrocity Act, Right of Persons with Disability 2016 में जो अमेंडमेंट आसला, Transgender Person Protection to Right 2019. तापरे Access of Marginalization and Empowerment Dynamics. देखो पूरा डिटेल हम केमति रखिछि. शेड्यूल कास्ट में कोन हबो, शेड्यूल ट्राइब पे केमति अछि. फाइन. तापरे माइनॉरिटीज में, देन पर्सन विथ डिसेबिलिटी, दिव्यांग जन हम जा कहउछंती. तर ओडिशा एम्पावरमेंट पैराडिग्म ओडिशा ऊपर स्पेशली जेमतेला फॉरेस्ट राइट एक्ट जोटा हम 2006 रे आस्थिला. ओडिशा ताको केमिति इंप्लीमेंट करछि. मो जंगल जमी योजना. देन अर्बन इंक्लूसिविटी में एम्पावरिंग ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज, मुक्तधारा एंड जगह मिशन इंटीग्रेशन. फाइन. रेडी टू यूज एटा गोटे हम आंसर फ्रेमवर्क गोटे करछु. एटा भी हम तादर इंक्लूड करछु. दी प्रकार तम केमिति आंसर लिखि परिबो. फाइन. And also we have included social empowerment of vulnerable groups. तांकर एम्पावरमेंट पे कौन कौन स्कीम्स वगैरह अच्छी, सिस्टमेटिक चैलेंजेस कौन अच्छी तांको पे. तापरे कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव सेफगार्ड हमें देखले थी. फाइन. गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट नारी शक्ति बंधन अधिनियम, प्रधानमंत्री मातृबंधन योजना, लखपति दीदी इनिशिएटिव, ओडिशा मिशन शक्ति मॉडल जोड़ा सुभद्रा शक्ति हो जाइए. देन एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन. चिल्ड्रन पे कौन अच्छी, द माल न्यूट्रिशन ट्रैप. आप जानते कि 1/3 malnutrient child of the entire world is present in India. तो तापे आमे जेमते अंगनवाड़ी पोषण ओके पीएम पोषण स्कीम्स वगैरह, चाइल्ड लेबर एंड स्ट्रक्चरल डिसकंटिन्यूएंस, सोशल डिजिटल वल्नरेबिलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल ले कौन कौन तांको में सेफगार्ड अच्छी, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लाइक सक्षम अंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0, पीएम पोषण,
ओके एटा कैपिटल एन हबो स्मॉल एन हो पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन ओडिशा अन्वेषा स्कीम फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब एंड शेड्यूल्ड कास्ट फैमिलीज तापर हला एम्पावरमेंट ऑफ द पुअर ओके vulnerability जेतेबेले आमे कहबा कि सोशल एम्पावरमेंट कहया मेनली vulnerable लोक मानक पे एम्पावरमेंट दरकार तो को माने vulnerable traditionally the women children SC ST including PBTG ଆଉ poor old age and obviously transgender तो तांकर केमिति एम्पावरमेंट करि हबो सेति पई जहा जहा स्कीम्स अछि फाइन एम्पावरमेंट ऑफ द पुअर एठी हम लिखले मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी डेप्रिवेशन vicious cycle आउ जहा जहा इनिशिएटिव्स अछि एम्पावरमेंट ऑफ ट्रांसजेंडर एठी हम ताकु भी रखले कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव सेफगार्ड रखले गवर्नमेंट इनिशिएटिव स्माइल स्कीम नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन ओडिशास अर्बन इनक्लूसिविटी इंटीग्रेशन सबु जिनस आमे एथिरे इंक्लूड कर रखिछंती सो दैट किछि भी क्वेश्चन जदी सोशल एम्पावरमेंट रो आसला वी कैन डू इट जेमती पीएन जन्मान जगा मिशन मिशन शक्ति लखपत दीदी नारी शक्ति बंधन अधिनियम ए सब स्कीम्स गुड़ा हमको लिखा पड़ो फाइन तापर कम्युनलिज्म अच्छी बाकी जेहेतु क्वेश्चंस जतिक आम डिस्कसन कर सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट दैट इज दैट यू कैन एक्चुअली कवर फ्रॉम आवर मटेरियल तुमको बहुत जगह जाकि खोजिकी मटेरियल टाइम वेस्ट करिया दरकार नहीं यू जस्ट बाय दिस और यू परचेज इट एंड रीड इट फ्रॉम देयर गोटे थर पढ़ी आगे खत्म कर जहाँ भी 5-6 पेजेस अच्छी गोटे थर पढ़ी खत्म करो जहाँ क्वेश्चन आसे तुम जमी करें पूरा डिटेल्स जिते डिटेल हो पार जो जो एंगल क्वेश्चन आसीपर जमी तुम टैकल कर सब गुड़ा मिसेक बनवा ट्राए कर राइट सो यू जस्ट टेक द एडवांटेजेस ऑफ दिस मटेरियल आम बर्तमान क्वेश्चन को जीवा देखो व्हाट इज सोशल एम्पावरमेंट एक्सप्लेन हाउ द पॉलिसी ऑफ सोशल एम्पावरमेंट हैव बीन इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया विथ एग्जांपल फ्रॉम ओडिशा माने आमको फास्ट लिखबार अच्छी सोशल एम्पावर आम कौन बुझुचु बाय सोशल एम्पावरमेंट व्हाट डू यू मीन बाय सोशल एम्पावरमेंट एंड सेकेंडली आम किसी पॉलिसी हाउ द पॉलिसीज ऑफ एम्पावरमेंट हैव बीन इम्प्लीमेंटेड जहाँ पॉलिसीज अच्छी आम केमिति इम्प्लीमेंट करछु बोथ कोटी कोटी इंडिया रे भी आउ ओडिशा स्पेशल माने ओडिशा को आम एज ए स्टेट नहीं कि ओडिशा स्टेट रे कौन कौन इनिशिएटिव अच्छी तार भी आमको एग्जांपल एटी मेंशन करिया पड़ियो दैट इज द थिंग दैट वी नीड टू डू एति काम करियार अछि फाइन सो सोशल एम्पावरमेंट इक्विप्स marginalized sections like SC ST women and minorities ठीक अछि SC ST women and minorities transgender भी अच्छी children भी अच्छी old age भी अच्छी but it's okay with the autonomy and resource to participate equitably in society overcoming historical discrimination through constitutional and targeted policy support एटा हला तार डेफिनेशन सोशल एम्पावरमेंट डेफिनेशन इज दिस वन फाइन तापर आमे आसीबा जोटा पचार पॉलिसी ऑफ सोशल एम्पावरमेंट सो देखिए आमे पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन एग्जांपल फ्रॉम ओडिशा ओडिशा हैव एक्टिवली लोकलाइज्ड नेशनल फ्रेमवर्क टू ड्राइव ग्रासरूट ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू डाइवर्स इंटरवेंशंस कौन कौन हो फास्ट है फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल ऑटोनॉमी मिशन शक्ति जोटा आमर एबे सुभद्रा शक्ति भी अच्छी सुभद्रा शक्ति ऑर्गेनाइजेस ओवर 70 लाख वुमेन एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बैक्ड बाय पायोनियरिंग 50% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लोकल गवर्नेंस ठीक अच्छे फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल ऑटोनॉमी है सेकंड एजुकेशन एजुकेशन पे कौन कौन अच्छी अन्वेषा एंड आकांक्षा अन्वेषा provides free English medium residential schools to marginalized rural children while Akanksha established urban hostels to offer SC/ST students in higher education अन्वेषा आकांक्षा then land और livelihood mission पे कौन अच्छी livelihood mission पे अच्छी forest right act 2006 land पे जो हमारे जागा मिशन थिला that you can mention जागा मिशन तापर हेल्थ केयर प्रोटेक्शन विजु स्वास्थ्य कार्ड जोटा आमर हो जाए गोपबंधु जन आरोग्य योजना विजु स्वास्थ्य कार्ड
ହେଇଯାଇଛି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ योजना फाइन आ वुमेन मानक पई तादरे कोन अछि एक्स्ट्रा 5 लाख माने वुमेन मानक पई टोटल 10 लाख रो ट्रीटमेंट इज फ्री ऑफ कॉस्ट पर ईयर अर्बन पुअर इंटीग्रेशन जागा मिशन एट जो लिखितली दैट इज लैंड टाइटलिंग एंड स्लम अपग्रेडेशन लाइवलीहुड सपोर्ट मो उपकारी बगीचा आउर भी लाइवलीहुड सपोर्ट अछि ठीक अछि आमे तले आउरी क्वेश्चन हम डिस्कशन करिवा आउरी किछि स्कीम्स अछि ताको आमे इंक्लूड करि परिबा लाइवलीहुड सपोर्ट रे रहला मो उपकारी बगीचा promotes backyard nutrition gardens among rural family directly tackling dietary gaps and malnutrition in tribal pockets ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରାଇବାଲ ଲାଇଭଲିହୁଡ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବି ଗୋଟେ ଅଛି ଫାଇନ୍ ଏସବୁ ତମେ ଆଧରେ ଇନକ୍ଲୁଡ କରି ଲେଖିପାରିବ ଦେନ୍ ହାଉ ଟୁ କନକ୍ଲୁଡ through targeted social security land rights and gender focused leadership odisha effectively converts constitutional ideals into ground level social empowerment creating a highly replicable model for inclusive development ଯେତେବେଳେ ବି क्वेश्चन से तुमको पचार सोशल एम्पावरमेंट माने सोशल एम्पावरमेंट तामान तुम सब धर नब कि किसी मेंबर अच्छा सोसाइटी जो मैंने कि कौन अच्छा जो मैंने अपलिफ्टमेंट दरकार बिकज दे आर नॉट एट पार विथ द मेन स्ट्रीम तो मेन स्ट्रीम से पछे जाइछन्ति तो तांको आमे केमिति नेई कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट करिया से विषय हमको लिखिया पड़िबो सो दिस इंक्लूसिव डेवलपमेंट कीवर्ड मस्ट to be mentioned in the answer copy right next we go to the next question that is your odisha's festival okay kon achi question pachara heji odisha's festival reflects the cultural pluralism and social harmony cite some examples ठीक ओडिशार फेस्टिवल केमिति कल्चरल प्लुरालिज्म आउ सोशल हार्मोनी की देखौछि सेटा हमको एथे शो करे अछि एथरे कोठी अछि ओडिशा कल्चर मटेरियल पेज नंबर 21 फाइन आमे सेटे चेक करिवे देखो एटा हला रीजनल ट्रेडिशन ऑफ ओडिशा फेस्टिवल विषय पचारथिला रीजनल ट्रेडिशन ऑफ ओडिशा फेस्टिवल्स लाइक 12 मास 13 पर्व ठीक अछि जते जहा जगन्नाथ सेंट्रिक ट्रेडिशन हमर हे गला रथयात्रा हे गला कांसेप्ट कोन सोशल इंपैक्ट कोन स्नान यात्रा तापर एग्रेरियन ट्रेडिशन लाइक रज पर्व तापर नुआ खाई जो जतल नुआ हार्वेस्ट हुए हमर अक्षय तृतीया देन मेरीटाइम हेरिटेज को आमे पालन करिया पे बालियात्रा फोक आउट ट्राइबल ट्रेडिशन पे द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर जोटा हमर बरगडर धनुयात्रा फाइन शीतल षष्ठी दांडनाट एंड छौ नृत्य सोशल कल्चरल इंपैक्ट कौन कौन आमर इंपैक्ट पड़ला तार लिंग्विस्टिक एंड लिटरेसी ग्रोथ सिंथेसिस ऑफ फेथ इकोनॉमिक इंजिन जदि तमे एई मटेरियल को गोटे थर नै कि बढ़िया रे पढ़ी दबो देन इजीली यू कैन आंसर ऑल दिस क्वेश्चंस आई एम नॉट प्रोमोटिंग तुमको जे कोनसी जगह रे जोटी भी तुमको फुल मटेरियल मिलुची जहाँ पे तुमको मे बी यू नीड टू स्पेंड सम मनी बट यू आर नॉट सपोज टू स्पेंड टाइम तुम पाखे 90 days रहिला सो यू आर नॉट सपोज टू स्पेंड टाइम ऑन सर्चिंग मटेरियल्स तमे आमठु नियो अलगा इंस्टीट्यूट अछि तांकोठु नियो जोटी नउछ नियो मेक श्योर जहाँ जहाँ क्वेश्चन आस्थिला जदि से सब क्वेश्चन कवर करी होची यू जस्ट टेक इट एंड रीड इट फाइन वी विल मूव टू द क्वेश्चन of PYQ 2024 okay Odisha festival reflects its cultural pluralism and social harmony cite some examples तो फर्स्ट आमको गोटे भलो इंट्रोडक्शन लिखा पड़ो देन बॉडी कंक्लूजन इंट्रोडक्शन सब चेष्टा करियो 30 रु 40 वर्ड भीतर हेले भलो एंड सेम 30 वर्ड पाखापाखि तुम इंट्रोडक्शन पढ़ाइले भलो तो 60 वर्ड गले तुमको 180 190 वर्ड भीतर कि अराउंड 200 वर्ड तुमको मिल जिवो बॉडी भीतर लिखिया पे ओके दैट इज द आइडियल distribution of words for writing a good answer introduction देखो ओडिशा's vibrant festival calendar आम जमते लिखि परिबा एठी ओडिशार फेस्टिवल और ओडिशार कल्चर इज नोन फॉर 12 मासरे 13 पर्व केमति लिखिबो दैट इज इंपोर्टेंट ए तुम इंग्लिश रे लिखिबो कोन 12 मास 13 पर्व एटा लिखिला परे तुम तांगु आर मीनिंग कौन से भी जस्टिफाई करियो कि 12 मंथ रे हमर 13 रो मोर मेजर और मेगा फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करा जाए इन द लैंड ऑफ ओडिशा
or you can write the same way ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି Odisha's vibrant festival calendar acting as a living testament to its cultural pluralism and deep rooted social harmony. The state's celebrations seamlessly blend diverse religious traditions, tribal heritage, and caste barriers to unified social fabric. आमको कौन देखियार अछि डाइवर्स रिलीजियस ट्रेडिशन रो देखियार अछि ट्राइबल हेरिटेज को हमको मेंशन करिया अछि जोथरे कि हमें कास्ट क्लास ऊपर को उठी की यूनिफाइड है कि हमें सेलिब्रेशन करछंदी जोडा लिखा है यूनिफाइड सोशल फैब्रिक फाइन एग्जांपल से तुम कौन लिख परियो फर्स्ट एग्जांपल इज रथ यात्रा द चैरियट फेस्टिवल द अल्टीमेट सिंबल ऑफ सोशल egalitarianism. Lord Jagannath, breaking rigid orthodox barriers, leave the temple sanctum to meet all devotees regardless of caste, creed, or religion. The festival honors Salavega, a Muslim devotee, by stopping the chariot at his shrine, epitomizing communal synthesis. ବୁଝିପାରିଲ କେମିତି ଲେଖା ହେଲା ପଚାରିଛି କ'ଣ ପ୍ଲୁରାଲିଜିମ୍ ହିନ୍ଦୁ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ବଟ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଲବେଗ ପାଇଁ ଅଟକିଲେ ସାଲବେଗ କମ୍ସ ଫ୍ରମ୍ मुस्लिम डिवोटी और मुस्लिम कम्युनिटी सो ये आमर कौन होची अलग अलग कल्चर को लेकिन आम जो प्लुरालिज्म अच्छी अलग अलग कम्युनिटी को आम और आम कहीपर सब कम्युनिटी हार्मोनी रे आम या सेलिब्रेट कर और वननेस और यूनिफाइड करके देखो जिनस को यूनिफाइड करके देखुना आम सेलिब्रेट कर सेकेंड पॉइंट इज अबाउट बालीयात्रा सेलिब्रेटिंग ओडिशास मैरीटाइम ट्रेड विथ साउथ ईस्ट एशिया दिस फेस्टिवल यूनाइट्स पीपल अक्रॉस कम्युनिटीज आम जानते साधव पुओ मैंने जोटा आमर अच्छी जावा सुमात्रा बाली सेठी से बिजनेस करने जाते तो तांकर ऑनर रे और सही हिस्ट्री को मन रखापी आम बालीयात्रा सेलिब्रेट कर इट ट्रांसेंड रिलीजियस बाउंड्री फोकसिंग ऑन शेयर्ड हेरिटेज मेरीटाइम प्राइड एंड इकोनॉमिक कोलैबोरेशन शेयर्ड हेरिटेज मेरीटाइम प्राइड आउ इकोनॉमिक कोलैबोरेशन ऑलमोस्ट सेकुलर हिसाब से आमको सेलिब्रेट कर एते तो आम किसी भगवान को पूजा करना कौन धर्म को लेकिन आम ये सेलिब्रेशन आम करना ये सेकुलर आइटम्स और सेकुलर जिनस जमती कि शेयर्ड हेरिटेज समस्त भितर मिसिक अच्छी मैरीटाइम प्राइड एंड इकोनॉमिक कोलैबोरेशन देन नुआखाई द agrarian festival of western Odisha promotes universal brotherhood people offer first crop of the season to the deity forgot past grievance and seek blessing from elders across all social strata ये कौन होची यूनिवर्सल ब्रदरहुड रो प्रमोशन होची जोटा प्रथम फसल आसे ताको भगवान पाखरे अर्पण करागला जहाँ मन मोटाव अच्छी जो ग्रीवांस अच्छी ताको सब भूली जाती ठीक अच्छी ह्यूमन आम समस्त ह्यूमन कार किसी गलती हो गला ताकू आम आपस बुझामणा करके आगे नहीं पारिबा तो ग्रीवांस को भूलिकी बड़ मानकर तो जो अच्छा ब्लेसिंग्स नहीं कि एटा नुआखाई जुहार जो आम कहते नुआखाई जुहार बड़ मान ब्लेसिंग्स नहीं कि आम एटा को सेलिब्रेट करती थर्ड है ट्राइबल एंड नॉन ट्राइबल सिंथेसिस लाइक चैत्र पर्व एंड करमा फेस्टिवल लाइक करमा एंड चैत्र पर्व सेलिब्रेट नेचर एंड एंसेस्ट्रल स्पिरिट गोटे नेचर को परसीव करछि गोटे एंसेस्ट्रल स्पिरिट माने हमर पूर्वपुरुष जो थिले तांकर आत्मा को तांकर स्पिरिट को आम पूजा करछंती observed passionately by both tribal that is Adivasi community and non-tribal rural folk by fostered deep environmental respect and religious integration देखो दीटा जिनस होला religious or religional not sorry not religious regional integration तो रहिला तारे तो environmental by respect भी रहिला in both the festival that is Chaitra Parva and Karma last la Sufi and folk syncretism festivals surrounding local peaks and signs like Satyabir or Satyapir bring Hindu and Muslim together to pray for community well-being, reflecting a beautiful interfaith heritage. देखो आम इंडिया कल्चर रे भी आमे माने सुफिशिएंट को पूजा करिया जानती फाइन इरेस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन हिंदू माने भी जानती जेमती अच्छी अजमेर रो जो अजमेर रो जो अच्छी दरगाह अच्छी सेठी लोक पूजा करिया जानती हिंदू माने भी जानती इवन चर्च मान को भी जानती विजिट करिया पई प्रे करिया पई नॉट विजिट करिया पई क्रिश्चियन भी जानती हिंदू भी जानती ओके आउ जेमती ठीक अछि तो दरगाह को गले
तापर जैन मानकर कि सिख मानकर जो तीर्थस्थली से भी हिंदू मैंने जाती। सो आमे आमर इवन इंडियन कल्चर नियो कि ओडिशा कल्चर नियो, आमर ये यूनिवर्सल ब्रदरहुड को आम अधिक प्राधान्य दिंती। आम सिकुलारिज्म उपर अधिक फोकस करती आ रिलीजियस को आम प्रैक्टिस करती एज ए प्राइवेट अफेयर। आउ ये जो क्वेश्चन पचार फाइन, द क्वेश्चन वाज अबाउट कल्चरल प्लुरालिज्म। तो आमको देखार थिला केमिति आम गोटे कल्चर सहित आ गोटे कल्चर को मिसेक आम नहीं चलते, स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ओडिशा। ठीक अच्छे, केमी तुम लिख बुझिपार रथ यात्रा तुम सालभैगर ना लिखिकी माने सालभैग आज ए मुस्लिम डेवोटी मेंशन कर बाली यात्रा शेयर्ड हेरिटेज मेरीटाइम आउ इकोनॉमिक कोलैबोरेशन कथा लिखिबो, नुआखाई रे यूनिवर्सल ब्रदरहुड कथा लिखिबो, पास्ट ग्रीवेंस को केमती आमे भूलुचंदी, बड़ मानक नुआखाई जुहार कहिकी जोटा आमे तांगोट ब्लेसिंग नउचन से सब जिंस लिखिबो, ट्राइबल आउ नॉन ट्राइबल सिंथेसिस रे चैत्र पर्व आउ करमा कथा लिखिबो, एंड सूफी आउ फोक सिंक्रेटिज्म ऊपर लिखिबो, सत्यवीर और सत्यपीर। कंक्लूजन कौन लिखिबो, फेस्टिवल्स इन ओडिशा आर नॉट मियर रिलीजियस रिचुअल्स, दे आर कलेक्टिव कल्चरल assertions. By encouraging community participation and breaking social divides, they preserve and strengthen the state's enduring legacy of peace and pluralistic harmony. केते बढ़िया लिखा है बुझी पारछो फाइन। तो एमिति करिकी हमको आंसर लिखिया पड़िबो, जेमिति एठी हम लिखिचंदी सेम वे पांचटा छटा पॉइंट बॉडी रे रखियो। ओके, बॉडीज पांचटा छटा सातटा जे तमे मन पकइबा सातटा नले पांचटा भी ठीक अछि। ओके, 5 पॉइंट्स इज ए गुड वन, एनफ कहबेनी बट गुड वन। पांचटा पॉइंट जदि मन पड़ছে इट्स ओके। इंट्रोडक्शन लिखिबा, बॉडी लिखिबा, तापरे कंक्लूड करिबा। कंक्लूड रे किछि नुवा जिंस लिखिबानी, जहा हम लिखिचंदी ता भितरु बाहर करिकि हमर आंसर को केमि सपोर्ट करिवो सेटा को हमको लिखिबार अछि कंक्लूजन रे। फाइन, नेक्स्ट हम देखिबा असेस द मेजर फैक्टर्स दैट लेड टू क्रिएशन ऑफ सेपरेट प्रोविंस ऑफ ओडिशा 1936, पेज 23 ऑफ ओडिशा हिस्ट्री मटेरियल। लेट मी शो यू द ओडिशा हिस्ट्री मटेरियल वंस। ओके, now see, it is creation of Odisha province. In this material you will get everything. ओडिशा रो क्रिएशन ऊपर किछि भी जदि क्वेश्चन पचरला तमे एई मटेरियल रो आराम रे आंसर लिखि दे परिबो। हम एते कोन कोन मेंशन करचंदी, फर्स्ट ला रूट कॉजेस द आइडेंटिटी क्राइसिस। आइडेंटिटी क्राइसिस हैला बोली सिना माने माने हमरो जो एंसेस्टर थिले से माने सेपरेट प्रोविंस क्रिएट कले। फाइन, तो एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रैगमेंटेशन हो, लैंग्वेज सप्रेशन हो, नौंख दुर्भिक्ष 1866 हो, ए सब जिनस तार रूट कजेस थिला। की ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइजेशन थिले आ लीडरशिप के लीडरशिप लीडर माने थिले से टाइम रो। उत्कल सभा 1882, उत्कल सम्मेलन 1903। एटा तो ओपीएससी ओटे फेवरेट क्वेश्चन, आइदर मेंस प्रीलिम्स से तो बहुत पचारछि, मेंस से भी केबे पचार देबो। उत्कल सम्मेलन हे गेला, तार लीडर के थिले मधुसूदन दास। तापरे हमर होला द पाथ ऑफ यूनिफाइंग और यूनिफिकेशन, की माइलस्टोन केमति केमि हम यूनिफिकेशन कले। ओके, गोटेला रिस्टली सर्कुलर गोटे फॉर्मेशन ऑफ बिहार ओडिशा प्रोविंस 1912 जेतले बेंगल को डिवाइड करिकि जेतले फास्ट ऑफ बेंगल को वेस्ट बेंगल ईस्ट बेंगल करा गला, तापरे ओडिशा और बिहार को सेपरेट प्रोविंस करा गला फ्रॉम द बेंगल। तापरे फिलिप डॉफ कमिटी 1924 साइमन कमिशन आगरे केमिति उत्कल सम्मेलनी लीडर माने जाईकी साइमन को भेटिकी ताकू सेपरेट प्रोविंस करिया पई माने कन्विंस कले। देन आटली सब कमिटी बसिला, डोनियल ओ डोनियल कमिटी 1931 जेतले हमर महाराजा कृष्णचंद्र गजपति राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से जाई भाग नै कि सेठी ए विषय रे फेर थरे कथावार्ता करिकि क्लैरिफिकेशन कले। तापरे हमर कमिटी गठन हला आ 1935 रे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आसला ता सहित ओडिशा प्रोविंस क्रिएशन हला। रोल ऑफ महाराजा केसी गजपति। ओके, तापरे हला फाइनल प्रोक्लेमेशन। डेट ऑफ क्रिएशन 1936 एप्रिल 1 जोटा हम उत्कल दिवस बोली मनौचंदी। फर्स्ट गवर्नर ऑस्टिन हबाक, सर जॉन ऑस्टिक हबाक। फर्स्ट केतरा थिला 6टा डिस्ट्रिक्ट, कटक, पुरी, बालेश्वर, संबलपुर, गंजाम एंड कोरापुट। कैपिटल थिला कटक। तापरे 1948 रे भुवनेश्वर एज न्यू कैपिटल एटा शिफ्ट करा गला। सिग्निफिकेंस कोन कोन अछि आदरे, ठीक अछि, की कमिटीज जल्दी जल्दी मन पकेया पई ए सब जिंस करछु। आउ तापरे जो लीडर मान रहले कृष्णचंद्र गजपति हुंतु, हरे कृष्ण महताब हुंतु, गोपबंधु दास हुंतु, समस्त लीडर के विषय भी आम डिटेल लिखि रखिछु। जदि लीडर के विषय भी पढ़ला तमे आराम रे केमती एग्जाम रे लिखि दे आसी परियो। एबे पचम नांती बट ओपीएससी केबे भी पचा दी पारे लीडर के विषय रे। सो
ताकू भी आमे ए मटेरियल रे मेंशन करी रखिछु। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, ठीक अछि। क्वेश्चन हमें डिस्कशन करवा, असेस द मेजर फैक्टर दैट लेड टू क्रिएशन ऑफ सेपरेट प्रोविंस ऑफ ओडिशा इन 1936। तो हम जानी द क्रिएशन ऑफ ओडिशा केबे हेतला, अप्रैल 1 1936 मार्क हिस्टोरिक माइलस्टोन एंड इट बिकेम इंडियाज फर्स्ट linguistic province before independence. This achievement was the culmination of protected struggle driven by deep seated administrative, cultural and political factor. बहुत सारे जिनस को इंटीग्रेट करके हेतिला। एमती हलानी कि गोटे दिन केसी गजपति महाराज पळेले आ कहिदेले हेगला। बहुत एफर्ट लागिछि तादरे, बहुत मीटिंग्स करा हेछि, बहुत लोक तादरे योगदान दैचंती। एफर्ट्स आर ह्यूज। सो सब जिनस को आमे टिके टिके करिकी लिखिବାକୁ पड़िबो। मेजर फैक्टर कौन? फास्ट ला एडमिनिस्ट्रेटिव डिसएडवांटेजेस एंड फ्रैगमेंटेशन। अच्छा तुम देखिबो रिसेंटली ओडिसा रो बहुत सारा जगार ना चेंज कराला, ऑलमोस्ट 60 प्लेसेस बोधे चेंज कराला। आई एम फ्रॉम केंद्रापड़ा, ठीक। केंद्रापड़ा रे आगु एमती लिखा होतला केंद्रापड़ा, PARA। एबे चेंज करी कोन कराला, केंद्रापड़ा, राइट। एटा गोटे एग्जांपल मु दउछि। आई एम फ्रॉम आली, आमर केन लिखा होगा जानछो AUL, एटा कोन आली, एबे तक कराला AALI। एटा तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ना। सिमिलरली तुम देखिबो अनुगुल, ताको लिखा होतला अनुगुल, लिखा होतला अनुगुल। एटा भी तो गलत प्रोनाउंसिएशन थिला। ब्रह्मपुर जगह रे माने ब्रह्मपुर जगह रे ब्रह्मपुर लिखा होतला, एमती बहुत सारा जगह थिला। नयागढ़, ठीक, नयागढ़ रे एमती लिखा होतला ना नयागढ़, ताको नयागढ़ करा गला। सो प्रॉब्लम कौन होतला सेतबेले, माने मोस्टली जो माने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थिले दे आर फ्रॉम बेंगल। तो जेहेतु बेंगल रो लोक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थिले, तो तांकर सुविधा हिसाब रे से माने ना को सब चेंज कर देले। तांकर ड वर्ड तांकर पसिबनी, ओके, ड जगह रे से माने सबले र बोली कहिबे, केंद्रापड़ा केंद्रापड़ा, ठीक अछि। इवन पढ़ाई को से पढ़ाई बोली कहि दियन, तो तांकर ड प्रोनाउंसिएशन हुएनी माने तांकर सेमती, माने तांकर लैंग्वेज रे सेमती ही अछि। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी लैंग्वेज, बट सेमानक लैंग्वेज सेमती अछि। तो सी जेमिति कथाबार्ता करती, जेहेतु एटी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन रहिले, ना गुड़ा सब एपट सपट करदेले। इवन तांकर स्टेट ना देख, ब्रिटिश माने देथिले कलकत्ता, तो सिटी इज नॉट द स्टेट कलकत्ता। ता कोन करा गला, एबे कोलकाता करा गला ना, चेंज करा गला। तो जे जोटी पावर रहिले से ताकू अपभ्रंश करी तांको हिसाब रे करदेले। इवन हमर ओडिसा रो ना जो कैपिटल हम कहले पूर्वतन कैपिटल कटक, एटा को भी चेंज करी कोन लिखा हो, KATAK, राइट। एते वर्ष ला कटक चलथिला, भूल वर्ड, भूल स्पेलिंग, तो से माने तांको हिसाब रे कर देथिले, राइट। तो जेहेतु एडमिनिस्ट्रेटिव माने से मानको पावर पावर थिला, सो वी फेस एडमिनिस्ट्रेटिव डिसएडवांटेजेस एंड फ्रैगमेंटेशन। माने ओडिसा तारो अलग अलग पार्ट करके अलग अलग प्रोविंस भीतर थिला। जेमिति उत्कल was dismembered under 4 administrative units, गोटेला बेंगल, माद्रास, सेंट्रल प्रोविंस एंड बिहार। चारटा अलग अलग प्रोविंस रे थिला, बिहार, बेंगल, माद्रास एंड सेंट्रल प्रोविंस। Being administrative peripheries, Odia speaking tracts suffered from systematic neglect, poor communication network and step motherly treatment. माने ओडिया को they are saying कि ओडिया is not a separate language, और से कहते कि it is just a dialect of बेंगली। बट तुम देखो ओडिया भाषा को, ओडिया लैंग्वेज को 1912 क्लासिकल लैंग्वेज रो मान्यता मिलला, जेबे कि ता बहुत पछरे बेंगली को मिलला। तो ओडिया केमिति तार माने गो डायलेक्ट हैला, ओडिया इज स्पेशल लैंग्वेज, बट सेतले हमको स्टेप मदरली ट्रीटमेंट मिलुतला। सेकंड है लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल सब्जुगेशन। ओडिया लैंग्वेज फेस्ड एन एक्जिस्टेंशियल थ्रेट, particularly during the language agitation in 19th century, late 19th century, when efforts were made to replace Odia with Bengali in schools and courts. बुझी परछो, ओडिया को हटै देकी माने स्कूल और कोर्ट रु ओडिया हटै के सेठी बेंगली चलिबो। This triggered an intense linguistic renaissance. फाइन। तापर देखो नेक्स्ट हला ग्रेट नॉन्ग ऑफ फामिन, जानि जंदी हमें 1866 मसिया रे the catastrophic famine exposed the deadly inefficiency of managing Odisha from distant Calcutta. ओडिशा रो डिसीजन ओडिशा नबो नै, ओडिशा डिसीजन कलकत्ता नबो। तुम से चिंता करो कलकत्ता ओडिशा भीतर केमती कम्युनिकेशन होतो, बहुत सारा नदी थिला, डायरेक्ट रोड ही नथिला कनेक्शन रो, रेलवे तो हेबी नथिला हेतोले।
तो ओडिशार खबर जीव कालकाटा को, कालकाटा डिसीजन नहीं पठेबे। ये गोटे 15-20 दिन 30 दिन कथा, ता भीतर डिसीजन जो आसिक पहुंचो से केते कौन चेंज हो जीवनी। तो जो नौंक दुर्भिक्ष जो आम कहते 1866 एटा केवल आप नुह कि ओडिशा पाखे सर्टेज थिला। नौंक दुर्भिक्ष तुम जब पढ़ तुम बुझीपार नौंक दुर्भिक्ष जब है ता पूर्व वर्ष भी सेमती कौन होता वर्षा है आमर फसल कम हो जाता। फसल कम हवा पर भी जी फसल होता टैक्स तो जहाँ कलेक्शन करागला तापर टैक्स हिसाब से जो धान चाउल आसला न रखिकी बेंगल को पठागला। ठीक अच्छे ताकू न रखिकी ओडिशा रे बेंगल को पठागला कि बिकज बेंगल वाज द माने कौन बेंगल सुप्रीमेसी थिला सेठी तांकर मैनेजिंग माने हेडक्वार्टर थिला कहया चले ब्रिटिश प्रोविंस ब्रिटिश इंडिया जो माने बेंगल प्रोविंस रे से सब हेडक्वार्टर थिला सेठी सब मैनेज करथिले। तो सेठी पठागला जेतले ओडिशा रो फेमाइन हैला सेतले कोन आसिया थिला सेतले आसिया थिला माने बेंगल रु आसिया थिला धान चाउल आसी पालानी बिकज फास्ट है कम्युनिकेशन प्रोब्लेम अच्छी बहुत सारा नदी अच्छी बहुत सारा नाला अच्छी केम पास करके आसवे। सेकेंड है मैनेजमेंट सेठी होची से माने एठिकार कौन सिचुएशन जानना एठिकार जो पचारे जे आम गवर्नर थिले आ जो राजा मान पचारा से ना ना सब बढ़िया अच्छी राजा मान थोड़ा ना खाइबार प्रोब्लेम थिला ना गवर्नर पाखे खाइबार प्रोब्लेम थिला। तो गवर्नर फिर भी जहाँ जी कन्विन्स करें बट मिसकम्युनिकेशन एत अधिक है बिजनेस किसी स्कोप नथिला कनेक्टिविटी नथिला तो ठीक जगह ठीक टाइम रे ना तो इनफॉरमेशन पहुंचला ना तो सेठी खाइबा आसी पहुंच पाला। 1/3 पॉपुलेशन ऑफ ओडिशा डाइड इन दैट फेमाइन। तो चिंता करो माने जेतले हमर ओडिसा रो 3 भाग रो गोटे भाग लोक सेतिर ही डेथ हे गला। यू कैन इमेजिन द कैटास्ट्रोफ ऑफ द कैटास्ट्रोफिक फेमाइन। चलो द कैटास्ट्रोफिक फेमाइन एक्सपोज द डेडली इनएफिशिएंसीज ऑफ मैनेजिंग ओडिशा फ्रॉम डिस्टेंस कलकत्ता। तो सब बेले हमर जो फेडरल स्ट्रक्चर अछि the union should be managed from the center the union subject अच्छी the state subject अच्छी it should be managed from the state itself नॉलेज स्टेट रो चीफ मिनिस्टर मतलब कौन अच्छी तो प्राइम मिनिस्टर सब चलई था ना। सो दैट इज कि जहाँ स्टेट सब्जेक्ट अच्छी ताको स्टेट रे मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर गवर्नर एम सब मैनेज करेंगे। It served as an eye-opener, convincing British administrator and local elites alike that Odisha required independent governance for effective administration। तो तापर एते लोक डेथ होला पर ब्रिटिश माने बुझिले कि ओडिशा को इंडिपेंडेंटली गवर्न करिया अछि दैट टू फ्रॉम देयर लैंड ओनली। राइज ऑफ लोकल लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन लाइक उत्कल सम्मेलन 1903 रे आसला। मधुसूदन दास प्रोवाइडेड ए कोहेसिव इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म। लीडर्स लाइक गोपबंधु दास कृष्णचंद्र गजपति हरिहर Murderaj Deo successfully mobilized the masses and persistently lobbied the British government कि ओडिशा as a separate state create करा जाओ। Institutional commission and reports persistent advocacy forced the British to evaluate demand through various statutory bodies। Key recommendation of Philip Dobb Committee, Simon Commission ଆଉ O'Donnell Committee ultimately validated the administrative necessity of a unified linguistic state। एते सब जिनस होला परे April 1 1936 रे ओडिशा प्रोविंस क्रिएट करा गला। द क्रिएशन ऑफ a separate Odisha province in 1936 was not an administrative accident but a hard fought victory against linguistic marginalization। It restored geopolitical identity of Odia people, setting a vital constitutional precedent for the post-independence linguistic reorganization of Indian states। Fine, एति जिनस हमकु लिखबार अछि एंड दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन आमे जिबा जोडे के हमरो सेशन लास्ट क्वेश्चन दैट इज एनालाइज द कॉजेस कोर्स हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ पाइक रिबेलियन 1817। देखो से जहाँ जहाँ पचारछि हमकु से लिखिया पड़िबो। आमे इंट्रोडक्शन तो लिखिबा, इंट्रोडक्शन लिखला परे आमे गोटे हेडिंग देबा कॉजेस, गोटे हेडिंग देबा कोर्स, गोटे हेडिंग देबा हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। आ जदी 4-5टा पॉइंट पचार सेठी दी दीटा हेडिंग को मिसे लिखले भी चलेगा बट हेडिंग देबा इंपोर्टेंट आ हेडिंग को एमिति बॉक्स भीतर रखिया इंपोर्टेंट। कीवर्ड फ्लोटिंग कीवर्ड हो बरम कीवर्ड यूज करो, विदाउट कीवर्ड मार्क मिलिबोनी। आमे देखिबा एटा भी पेज 17 ऑफ ओडिशा हिस्ट्री मटेरियल। जस्ट आई विल शो यू एंड देन वी विल स्टार्ट। पाइक रिबेलियन ओके देखो दिस इज द पाइक रिबेलियन ऑफ 1817 जीएस पेपर 1 रे पाइक रिबेलियन। फाइन
एटी आम किसी हिंट्स भी देचु सो यू कैन गो थ्रू दैट बैकग्राउंड हु आर द पाइक पाइक माने किए कहा को आम पाइक कहते ओके प्रहारीस किए बनुआस किए ढेंकियास किए तापर कजेस ऑफ द रिबेलियन कहीं कज स्टार्ट है लीडरशिप बक्सी जगबंधु हो गले कोर्स ऑफ रिबेलियन केमती चलला एर्ली रेजिस्टेंस 1817 पूर्व सिग्निफिकेंस एंड इंपैक्ट ये सब जिनस तापर इवन 1857 रे वीर सुरेंद्र साईकर जो थिला रोल सेटा भी हम करछो एटा भी गोटे नेक्स्ट लास्ट ईयर गोटे क्वेश्चन थिला तो तांकर चाकी खुंटिया ये सब जिनस हम मेंशन करछु सो दैट तुम जो पढ़िबो तुमको गोटे गोटे थर रे कंप्लीट हो जाओ तुमको बारंबार बारंबार से जिनस पढ़ी टाइम वेस्ट करिया नाही ठीक आमे सब जिनस ऑलमोस्ट तादरे मेंशन कर रखिछु तुमर काम यू जस्ट टेक द मटेरियल and read it, revise it, write the mock. That's it. Material नियो पढ़ रिवाइज कर आउ मॉक दियो एटा तुम काम आम बर्तमान क्वेश्चन को जीवा एनालाइज द कॉज कोर्स एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ पाइक रिबेलियन 1817 इंट्रोडक्शन लिखिबो द पाइक रिबेलियन केबे आइतला 1817 ऑफ खोर्धा ओडिशा वाज ए फायर्स armed uprising against British East India Company. Fires armed uprising. Predating the 1857 mutiny, जो सिपाही mutiny वाले हम कहउचंदी, it stands as one of India's earliest organized, broad-based anti-colonial movement. के जन आकु कहउतले कि फास्ट माने सिपाही mutiny आगुरु भी एटा प्रथम विद्रोह against the British, but टेक्निकली इटा हो पारिबनी बिकॉज ऑफ सो मेनी मिसिंग कॉजेस स्टिल आम एटा कहि परिबा कि एटा 1817 रे हेतिला जोटा कि सिपाही म्यूटिनी आगुरु हेतिला एंड इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट ऑर्गेनाइज्ड बुझनो माने जेतु पार्टिसिपेशन बहुत लार्ज थिला ऑर्गेनाइज वे रे हेतिला ब्रॉड बेस्ड एंड एंटी कॉलोनियल मूवमेंट आम देखिया तापर कॉजेस कौन कॉजेस अछि फर्स्ट कॉज इज अबाउट इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन द ब्रिटिश confiscated the Nisakar Jagirs এটা ঠিক বুঝো Nisakar Jagirs that is rent free land को माने rent free land मिलुतला तो पाइक एक्चुअली पाइक माने कोन पाइक माने हेले दे आर एग्रीकल्चरल ओके एग्रीकल्चरल पीपल और माने से माने चासी थिले एक्चुअली से चाष बास करंती बट से माने मिलिटरी ट्रेनिंग नेथिले तो जेतल दरकार हुए राजा भाई से फाइट करंती तो दैट इज पिजेंट मिलिटिया और मिलिशिया तो से माननकु सरकार और राजा निशाकर जागीर देते जो लैंड से यूज करिए बट दे डोंट नीड टू पे एनी रेंट जोटा आम खजना बोली कहते एवं सरकार को दौरान आगुरी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दौले से रेंटा दबाक पड़ ना तो जिते ब्रिटिश जो जागीर को छड़े नेला दैट डिवास्टेटेड देयर लाइवलीहुड तो कारण से जहाँ भी चाष करते चलुले सेकेंड है मॉनिटरी डिस्ट्रेस The traditional cowrie currency was replaced by metallic coin system. आगुरी काउडी कोर्ट रे लोक माने तांकर माने जहाँ भी सिस्टम थिला कोर्ट रे से देवा नवा करथिले तो सेटा को एज ए कॉइन एज ए रुपी से यूज करथिले बट मेटालिक कॉइन आसला द्वारा से काउरी और जो कौड़ी थिला दैट इज रिप्लेस्ड फोर्सिंग पिजन टू पे हाईली इन्फ्लेटेड रेवेन्यू स्ट्रिक्टली इन सिल्वर तांको कोन दवा थिला कौड़ी तो दे परिबनी तांको कोन दवा पड़ियो सिल्वर रुपीस दवा पड़ियो दैट टू एट ए हायर कॉस्ट तापला सॉल्ट मोनोपोली ब्रिटिश इन 1804 salt policy banned local salt manufacturing making a daily staple unaffordable आगुरु ए माने पाइक माने कि लोकल लोक माने सेठी चिलिका भी अछि ना पाखरे तो लुण को समुद्र रो आनी की यूज करथिले बट 1804 रे ब्रिटिश सेटा को बैन कर दिला कि लोकल सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग हो पारे तुमको ब्रिटिश टू किनिक नवा पड़ो दैट टू एट ए हायर प्राइस दैट आल्सो क्रिएट्स डिस्ट्रेस अमंग द पीपल नेक्स्ट कौन है पॉलिटिकल ट्रिगर द डिपोजिशन ऑफ किंग ऑफ खोर्धा हॉट रिलीजन प्राइड नॉट रिलीजन सॉरी हॉट रीजनल प्राइड एंड द फ्रॉडुलेंट सीजर ऑफ कमांडर बक्सी जगबंधु स्टेट एक्टेड एज फाइनल कैटालिस्ट एटा ताको ट्रिगर करेला फॉर द मूवमेंट तापर कोर्स ऑफ रिबेलियन से केमिति से रिबेलियन आगु आगु बढ़ला स्पार्क माने जोटी स्टार्ट हला 1817 मार्च मसिया रे
ମାର୍ଚ୍ଚ 1817 ମସିହା 400 କନ୍ଧ tribals from Gumsar march into Khurda joining forces with Bakshi Jagabandhu and local ପାଇକ 400 କନ୍ଧ ଟ୍ରାଇବାଲ ଘୁମସାର ରିଜିୟନରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଲୋକାଲ ପାଇକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଲେ। ଟାର୍ଗେଟ ଅଫ ଆଟାକ୍ କ'ଣ ଆଟାକ୍ କରିବା ତାଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ ଥିଲା ୟୁଜିଂ ଲର୍ଡ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜ ଏ ୟୁନିଫାଇଂ କଲଚରାଲ ସିମ୍ବଲ ରିବେଲ ଆଟାକ୍ଟ ବ୍ରିଟିଶ ଅଥରିଟି ବର୍ନିଂ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଲୁଟିଂ ଟ୍ରେଜେରୀ ଆଣ୍ଡ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟିଂ ରେଭିନ୍ୟୁ ରେକର୍ଡସ। ବ୍ରିଟିଶ ଅଥରିଟିର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଜାଳିବା ट्रेजरी को लूट करवा आउ डिस्ट्रॉइंग रेवेन्यू रिकॉर्ड्स। एक्सपेंशन केमती केमती हला द रिबेलियन क्विकली स्प्रेड बियॉन्ड खोर्धा एनगल्फिंग पुरी पिपिली कटक एंड कुजंग कोड कोडी व्यापी थिला खोर्धा रु स्टार्ट हेकी पुरी पिपिली कटक एंड फाइनली कुजंग ता केमती सप्रेस करा गला हम पूरा कोर्स लेक्चर ना कोड स्टार्ट हला केमती एंड हला। सरप्राइज्ड बाय द स्केल द ब्रिटिश डिक्लेयर्ड मार्शल लॉ and launched a brutal military crackdown, suppressing the main revolt by late 1817. Bakshi Jagabandhu continued guerrilla warfare until surrendering in 1825. तापर तो तुम जानी कौन है बक्सी जगबंधु सहित। And last part of the question was about historical significance. First la policy shift कौन policy shift कराला it forces the British to implement softer administrative reform, reduce land revenue and address artificial salt scarcity जोटा माने किछि थांदे ना मुनाफाखोर व्यवसायी सॉल्ट प्रेजेंट थिबो ताको सप्रेस कर रखिबे रेट बढ़ेबे तो ता ऊपर भी एक्शन निया गला लैंड रेवेन्यू को कम करा गला आ सॉफ्टवेयर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म तो हबो बट किछि सडन न करिक धीरे धीरे सॉफ्ट वे रे लोक मानन को कन्विंस करिक केमती रिफॉर्म करा हबो से विषय रे ब्रिटिश माने काम करे स्टार्ट कले। देन pluralistic unity it demonstrated an extraordinary socio-economic alliance bringing together royals land owning militia tribal groups and peasant against colonial rule। देखो समस्त केमती से गोटे लाइन को नहीं पळे आसले माने गोटे जगह केमती कर देले कि आसले रॉयल फैमिली माने लैंड ओनिंग मिलिशिया जोटा काम पाइक माने कहउचंती ट्राइबल ग्रुप्स तांग से जोग देले peasants against colonial rule। and the last point is national legacy it shattered the myth of passive native submission earning an enduring status in Indian history as a pioneer resistance movement often celebrated as first war of independence। okay first war of independence is still it is in okay it is in controversial am likhi paribani right। Conclusion I am going to conclude the PYQ rebellion was a structural breakdown of early British revenue experiment by prioritizing regional pride and economic survival. It left an indelible mark on India's long freedom struggle। बढ़िया लिखा है देखो एटा जे तुम जानिछ ऑथर के कहितले फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस तांको ना लेके हम लिखि परिया बट जनरल न लिखवा भलो फाइन। सो दिस इज ऑल अबाउट द 4 क्वेश्चंस। सो आमर वर्तमान few informations okay lecture is over just 2-3 minutes give me 2-3 minutes just few information तो आमर एबे मॉक फॉर मेंस चलची जोथरा हमर एसे कंप्लीटेड आमे 40 टा एसे रो कंपाइलेशन भी देचू आ 4टा टेस्ट देचू तापरे जीएस पेपर 2 रो आमे स्टार्ट कलु मॉक 1 ऑफ जीएस पेपर 2 इज कंप्लीटेड मॉक 1 आ मॉक 2 टा 28 रे हबो 28/6 रे हबो फाइन। तार सहित हमर होम साइंस ऑप्शनल चलची होम साइंस ऑप्शनल फाइन। देन वी हैव ओडिसा मॉड्यूल रो मटेरियल भी अछि हम पागे जेमते मु देखैली I will bring a complete video to show everything कि how the question can be tackled by our material। ओडिसा मॉड्यूल रे तुमको ओडिसा रो कंप्लीट हिस्ट्री मिलिबो तुमको जेंति मु देखैली ओडिसा रो कंप्लीट ज्योग्राफी मिलिबो ओडिसा रो हेरिटेज तुमको मिलिबो एंड ओडिसा रो सोसाइटी ओडिसा एंड इंडिया सोसाइटी फाइन एतिक जिंस तुमको मिलिबो सो दैट तुम जीएस एतिक जिंस परे आउ कोन रहला ज्योग्राफी ऑफ इंडिया इंडियन ज्योग्राफी अल्प किसी तुम पढ़िया पड़ो आउ रहा जोटा हिस्ट्री रो 1857 रु नहीं इंडिपेंडेंस पर्यंत दैट कैन तुम से आराम रे पढ़ी
जोटा मेन पिला माने जो स्ट्रगल करती दैट पार्ट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड तुम जब ये पार्टा भी नवा चाहो देन ऑल्सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस द नंबर इज दिस वन आई एम राइटिंग इट once again 7989778247 आइदर तुम टेलीग्राम करो व्हाट्सएप करो कि कॉल okay so you can either join on main series you can join on home science optional or यदि ओडिशा मॉड्यूल नवार अच्छी कि अदर मटेरियल भी आम बहुत जल्दी रिलीज करूँ इफ यू वांट टू गेट दैट you can contact us fine so thanks for watching the lecture have a great day